Good morning, dear students. How are you all? I hope you are doing great. In today's video session, we will study science. In our previous video session, we have studied chapter 3, housing, in which we have studied different types of houses like kacha house, pakka house. Then we have studied special house. Then we have studied how should be your house looks good. Now, in today's class, we will study a clean house. That means how you will clean your house. Okay. So the first point is household waste should be thrown into dustbins and it should be covered. That means आपके हाउस में आपका हाउस का जो भी कचरा निकल रहा है, जो भी वेस्ट है वो आपको किस में थ्रो करना चाहिए? डस्टबिन में. ओके. एंड इट शुड बी कवर्ड. दैट मीन्स डस्टबिन शुड बी कवर्ड. मतलब जो भी आपका हाउस का कचरा निकल रहा है, जो भी गार्बेज निकल रहा है वो आपको डस्टबिन में डालना चाहिए. एंड डस्टबिन्स जो है वो कवर्ड होने चाहिए. ओके. डस्टबिन्स कवर्ड क्यों होने चाहिए? क्योंकि अगर आपका डस्टबिन कवर्ड नहीं होगा तो वहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटोज़, हाउस फ्लाइज और डिफरेंट कॉकरोचेस, तो वो सब आपके घर पे क्या करेंगे? डिजीज़ेस स्प्रेड करेंगे. तो इसी वजह से आपके डस्टबिन शुड बी कवर्ड सो दैट हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज़ एंड कॉकरोचेस कीप्स अवे फ्रॉम योर हाउस. सेकेंड पॉइंट, फ्लोर शुड मॉप डेली एंड वी शुड यूज़ अ germ killer while mopping the floor. That means आपको अपने घर का फ्लोर जो है रोज़ मॉप करना चाहिए. देन मॉपिंग के टाइम पे आपको एक जर्म किलर का यूज़ करना चाहिए. दैट मीन्स यू कैन यूज़ फिनाइल या कोई भी ऐसा जर्म किलर जो अपन वाटर के साथ यूज़ करके अपने फ्लोर को क्लीन कर सकें. देन टॉयलेट एंड बाथरूम मस्ट बी क्लीन डेली. आपके घर में जो भी टॉयलेट्स हैं, बाथरूम्स हैं, दैट वो रोज़ की रोज़ हमें धोने चाहिए. क्यों? इफ़ वी क्लीन द toilets and bathrooms daily, then we can keep away mosquitoes, house flies and different types of bacteria from our house. Objects should be kept in their right place. That means आपके घर के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको राइट प्लेस पे रखनी चाहिए. जहाँ जिनकी जगह है उनको वहीं रखना चाहिए ताकि जब भी आप उसे ढूंढें तो वो आपको टाइमली मिल जाए. You can search them easily, and if you keep the objects on the right places, then your house will look beautiful and good. Okay. If you will keep your objects on their places, then your house will look beautiful. Then the drain from kitchen and bathroom should be well covered. That means जो आपके बाथरूम एंड किचन से जो ड्रेन्स आ रहे हैं, ड्रेन्स मीन्स जो पाइपलाइंस आ रही हैं वो वेल कवर्ड होनी चाहिए, वो ओपन नहीं होनी चाहिए. इफ़ द ड्रेन्स विल बी ओपन देन so many bacterias was there, then so many house flies, cockroaches will come there and spread diseases in your house. Then furniture should be dusted and cleaned regularly. आपके घर में जो भी फर्नीचर हैं वो कैसी होनी चाहिए? डस्टिंग होनी चाहिए उनकी रोज़ एंड रोज़ उनको क्लीन करना चाहिए. दैट मीन्स उनको कपड़े से आपको रोज़ क्लीन करना चाहिए एंड रोज़ उनकी डस्टिंग करनी चाहिए. इफ़ ऑल दीज थिंग्स विल बी क्लीन एंड डस्टेड रेगुलरली, देन योर हाउस विल लुक ब्यूटिफुल एंड द बैक्टीरियाज, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज विल keep away from your house. So in this topic we have studied these points that your dustbin should that household wastage should be dumped in the dustbin only and the dustbin should be covered. Then we have studied our floor should be mopped regularly and we should use a germ killer to mopping our floor. Then our toilets and bathroom must be cleaned daily. We should clean our toilet and bathroom daily. Then objects should be kept on their places, that the objects which are kept in your house should be kept on the right places so your house will look beautiful. Then the drain from kitchen and bathroom should be well covered. That means the pipeline that are coming from your bathroom and kitchen should be well covered so that the diseases does not spread. And the last point,
furniture should be dusted and cleaned regularly. That means you should clean your furniture regularly. So our next topic is clothes and fibers. So students, can you please tell me what early man used to wear? Early man used to wear leaves and skins of animals and to cover their body. Now what we use to cover our body? Yes, clothes. So we wear clothes to cover our body. Why do we wear clothes? To cover our body. हम कपड़े क्यों पहनते हैं? हमारी बॉडी को कवर करने के लिए. Now students, why we wear clothes? Here some more reasons are there. First, keep ourselves warm in winters. If we wear clothes, we will keep ourselves warm in winters. Okay? जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, अगर हम सर्दियों के मौसम में हम कौन से कपड़े पहनते हैं? गर्म कपड़े. तो उस गर्म कपड़ों की वजह से हमारी बॉडी कैसी रहती है? वार्म. तो वी कीप आवरसेल्फ वार्म इन विंटर्स. टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम सन्स हीट इन समर्स. इन समर्स वी यूज टू वेयर क्लोथ्स made with light material. That means we used to wear cotton clothes. Okay, so समर्स में हमें क्लोथ्स किस लिए हेल्प करते हैं? जो सन की हीट आ रही है, डायरेक्ट हीट आ रही है सन की हीट, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? क्लोथ्स पहनते हैं. देन टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम रेन एंड इंसेक्ट बाइट्स. हम कपड़े क्यों पहनते हैं? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रेन से एंड इंसेक्ट से. अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे, हमारी ओपन बॉडी पे कोई भी इंसेक्ट आके बाइट कर सकता है. सो टू वी यूज टू वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम रेन एंड इंसेक्ट बाइट्स. नेक्स्ट पॉइंट, टू लुक गुड. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इफ वी विल टू लुक गुड, वी वेयर क्लोथ्स टू लुक गुड. इफ वी विल नॉट wear the clothes, then we will not look good. So we wear clothes to look good. Now students, in this topic we will study one more topic, that is fiber. Fibers. What is fiber? First, fiber is a material made of threads. Fiber एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि थ्रेड्स से मिलके बना होता है, डिफरेंट थ्रेड्स से मिलके बना होता है. So fiber is a material made of threads. Then there are two types of fibers. First is natural fiber and second is synthetic fiber. Now students, what is natural fiber? Natural fibers are obtained from either plants or animals. We can obtain natural fibers either from plants or from animals. There are two types of fibers. Remember that. First is natural fiber and second is synthetic fiber. Natural fibers we obtain from plant or animal. That means two types के fibers होते हैं. First natural fiber and second synthetic fiber. Natural fiber हमें किससे मिलता है? या तो हमें plant से मिलेगा या फिर हमें animal से मिलेगा. So let's see the example of natural fiber. Plant fiber is cotton and jute. That means we get fiber from plant, that is cotton and jute. And the example of animal fiber is wool and silk. That means we get wool from sheep and silk from silkworm. That means we are getting this animal fibers from animals. Then second type of fiber is synthetic fiber. We can say synthetic fiber also man-made fibers. Okay, why we can say synthetic fibers the man-made fibers? Because man-made fibers we get from humans. That means man-made fiber prepared by humans in factories, and the example of man-made fibers are nylon, terracotta and polyester. That means we get
man-made fiber from humans, and human made that man-made fibers in factories, different types of industries, and examples are nylon, polyester, terracotta, and the human man-made fibers are also called synthetic fiber or human-made fiber. Okay students, so in this topic we have studies clothes and fibers. Clothes, why we wear clothes? To cover our body, and then to keep ourselves warm in winters, to protect ourselves from sun's heat in summers, to protect ourselves from rain and insect bites, and to look good, most importantly to look good. Then we have studies fibers. In fibers, what is a fiber? Fiber is a material made of threads. Okay, so there are two types of fibers. First is natural fiber and second is synthetic fiber. Natural fibers are obtained from either from plant or from animals. An example of plant fiber is cotton and jute, and animal fiber is wool and silk. Then second one is man-made fibers. Man-made fibers are made from humans, in which and made in factories. They are also called synthetic fibers. Example nylon, terracotta and polyester. Now students, we will do one exercise in our book, that is, our book is Cordova Learning Science Class 3, okay, in which at page number 23 one exercise is given. The question is, now match the following to know sources and uses of natural fibers. In this exercise, some fibers has been given, that means name of fibers has been given. Then आगे उसका source दिया हुआ है कि वो plant से मिला है या animal से मिला है. Natural fiber में वो किस से मिला है, हमें plant से मिला है या animal से मिला है, and then उस fiber से कौन सा cloth prepare हुआ है. So in this exercise, first one is given silk. We get silk from silkworm. ठीक है, silk is we are getting from silkworm, and the cloth prepared from silk is silk sari. Okay, you can get this exercise on page number 23 in your book. I am explaining you here. Then the second point is jute. Jute we get from jute plant, and from jute plant the jute bag is made here. Okay, then third is cotton. We get cotton from cotton plant, and from cotton the cotton shirt is made here. Okay, then fourth and last point is wool. Wool we get from sheep, and sheep gives us muffler. That means sheep gives us wool, and wool from wool we make muffler here. You know children, we are making winter clothes from wool. ठीक है, and wool we get from sheep. So muffler is also a winter wear, and we get wool from sheep. Okay students, thank you so much. I will send some exercise with this video, so complete it and read this topic again. Okay students, thank you.